Okay, so let us start with this. आज का video is specially on the topic how to solve the numerical problems on the lesson sound, which is lesson number 6 of the 7th standard icse board physics. So start करते with this. Open up your page number 102 of your this physics textbook, and यहाँ पे एक example है. The frequency of the tuning fork is 200 hertz, and what is the time period of the vibration? Okay, that's all fine. यहाँ पे दो टाइप का क्वेश्चन है. सो एक में उन लोग ने पूछा है टाइम, दूसरे में उन लोग ने पूछा है फ्रीक्वेंसी. एंड ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. एंड ये दोनों भी फॉर्मूला सेम ही है. जस्ट लाइक व्हाट वी हैव द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t अ टाइम टेकन. एंड ये टी का अगर तुम लोग शफल करते हो, मतलब लेफ्ट साइड में अगर वो जाता है तो ऊपर जाएगा. And what we get is this: t is equal to 1/frequency, time is equal to 1/frequency. तो एक ही फॉर्मूला है जिसको हम लोग हमेशा शफल करते रहते हैं. So let us see this. What we have is the frequency given is 200, and then what we want is the time taken. So just like if this is given and हम लोग ने बोला है कि टाइम चाहिए, तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला बिकॉज वो हम लोग को दिया है. तो वी हैव टू पिक दिस फॉर्मूला. सो ये फॉर्मूला हम लोग साइड में लिखते हैं. टी इज इक्वल टू 1/frequency, टी इज इक्वल टू 1/200, एंड जस्ट एक सिंपल डिवीजन. आई विल से 7th स्टैंडर्ड में इससे सस्ता सम तुम लोग, जस्ट लाइक डिमांड है ना, सस्ता है ना, अच्छा ये सबसे सस्ता सम है. 1 को डिवाइड करना है, एंड व्हाट वी हैव इज द 1/200. सो व्हाट वी गेट इज अ टाइम टेकन is equal to 0.005 seconds, and that's all. And start करते with the second example. ये बहुत easy है, इसमें कुछ नहीं है, बस you have to select one formula कि मुझे ये फॉर्मूला लेना है, ऊपर वाला या फिर ये नीचे वाला. मीन्स you have to see what is missing. And again solution भी सस्ता है, फॉर्मूला भी बहुत सस्ता है. So what we have is the example number 2. The vibrating string completes the one vibration is the in 1/60 seconds. What is the vibrational frequency? Okay, इसमें थोड़ा झोल है, but I have to show this because जब बात इनवर्स की आती है, पावर्स की आती है, डेसिमल्स की आती है, तो obviously and also about the shuffling तो थोड़ा बहुत झोल हो जाता है. So let us see what is this. In the second example, again I'm saying open up your page number 102 from this textbook of physics. Example number 2. So क्या हम लोग के पास, okay, let us see this. Okay, time is given. T is equal to 1/60. Okay, that's so fine. T is given. तो हमें क्या चाहिए? फर्स्ट एग्जांपल में हम लोग ने ये यूज किया, अभी सेकेंड में हम लोग ये यूज करेंगे. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t. Okay. So let us fill this. Filling करते विद द फॉर्मूला. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t and t का वैल्यू इज 1/60. Now people will really get confused जिससे ये शफलिंग नहीं आता. मीन्स लेफ्ट राइट का देखा है, लेकिन अप डाउन का भी हमें नॉलेज होना चाहिए. तो लेट मी शो दिस हाउ टू डील विद दिस. इज अपॉन एंड अपॉन. व्हेन वी राइट अ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/60. सो अगर ये जो डिनोमिनेटर में ये दो फ्रैक्शन, आई विल से 1 फ्रैक्शन ऑन डिनोमिनेटर, ये जब ऊपर जाता है तो इसका रिवर्स हो जाता है. जस्ट लाइक ये अगर ऊपर जा रहा है तो 60 ऊपर जाएगा एंड 1 नीचे आएगा, एंड इट विल बी अ होल ब्लैंक. सो इफ यू सी 1 1 1 एंड व्हाट वी गेट इज द क्लियरली 60 हर्ट्ज. सो अगेन ये एग्जांपल 1 से भी ज्यादा सस्ता है. सो आई डोंट थिंक कि इसमें किसी का मार्क्स जाना चाहिए. ये फिजिक्स के टेक्स्ट बुक का सबसे इजी फॉर्मूला एंड सबसे इजी सोल्यूशन है, एंड इसमें किसी का मार्क्स जाना नहीं चाहिए. एंड अगेन बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माय स्टूडेंट्स ऑफ 6th standard, 7th standard एंड द 8th standard. Surely the video is coming on the 8th standard. मुझे बहुत से स्टूडेंट ने बोला कि 8th standard इलेक्ट्रिसिटी के सम्स के ऊपर एक वीडियो आना चाहिए. Surely I will make this, and back to back the 6th standard is coming, and 7th standard के जो 2 लेसन का रिविजन है उसका भी वीडियो आने वाला है बिफोर योर एग्जाम. एंड दैट्स ऑल फाइन, एंड अगेन बेस्ट ऑफ लक.